Hello everyone. Let us start the special edition of EVS. But before that, this is my app GS Easy. ଆପଣ ଏଟା ମୋବାଇଲ ରେ ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣ Google App Store or Play Store ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ GS Easy. ତ ସବୁ month ର current affairs exclusively current affairs views ହିଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦଉଛୁ. So let us start. ଏବେ ଯେହେତୁ OS exam ଅଛି, we will be giving you a quick revision of environmental studies. EVS तो आपनकर OS एग्जाम रे जहाँ भी EVS रो क्वेश्चंस पड़े तो EVS रो पढ़िबार गोटे वे अछि गोटे स्वतंत्र वे अछि सेटा तो हमें हमरा ऐप रे कवर अप करछु किंतु जेहेतु हमरा OS एग्जाम अपकमिंग अछि सो सेथरे हमें देखिबा we will be covering the entire EVS section at a glance कोन कोन important questions updated ही परिबा so let us start okay For any other queries, you can directly download my app GS Easy from your mobile, Google Store or App Store for exclusively current affairs videos. Okay, important conventions. हमारे environment रे बहुत environment को protect करने को बहुत सारा conventions था. Okay, so one of the convention is related to wetland. जेतोले गोटे river, आ गोटे जगह रे land. तो ए दिटा जो इकोटोन टा एटा को हमें wetland कहूचे. Okay, so ये wetland जोटा तो wetland गोटे जगह रे wetland अच्छी कि नहीं? Yes, we can declare a place as wetland or not. So for identification of that purpose, whether we have to identify for identification that whether a site will be included in the list of wetland or not, that convention is provided in Ramsar Convention. Basically Ramsar what is Iran ro gote city सेठी जो मीटिंग अप हेतिला सेठी लाइन अप हेतिला कि रामसर कन्वेंशन रे खाली वेटलैंड गोटा आइडेंटिफिकेशन हो हां ए जगहटा भलो वेटलैंड अछि याकू प्रोटेक्ट करबा याकू वेटलैंड रे रखिले एटा बेटर प्रॉस्पर करि परिबो so like that so identification of any wetland site is included in which site Ramsar Convention ये क्वेश्चन ऑलरेडी ओएस रे पढ़िछि so update information is India has total 75 wetland तामाने इंडिया रो फर्स्ट wetland is Chilika Lake India's first wetland is Chilika Lake and 75th wetland is इत्तेफाक से हमरो सेम ओडिसा रो अंशुपा लेक आ जदि पछरे सबटु बडो wetland कोडा that is also Chilika किंतु जदि गोटे वेटलैंड अच्छी आ से वेटलैंड टा धरनियंतु किछि डेंजर जोन रे आसी कि सेटा खराब हेई जाउची किबा खराब हबार अछि किबा फ्यूचर रे खराब हबा परिस्थिति रे अछि किबा खराब हबा स्टार्ट हेलानी तो ए भलिया कंडीशन ने ताकू हमें कोन करबा प्रोटेक्ट करबा दरकार सो वेटलैंड को प्रोटेक्ट जदि करबा ताहले सेटा को रेकॉर्ड रे आसे दैट कन्वेंशन इज नोन एज मॉन्ट्रियक्स रेकॉर्ड So remember, wetland को only identify करिवो रामसर कन्वेंशन किंतु wetland जदि डेंजर होउची डेंजर अछि किमा डेंजर हेई सरलानी किमा डेंजर जोन रे जाउची that is prevented from Montreux record आम इंडिया रो फर्स्ट wetland conservation center is opened in Chennai that is a important current affairs now तो Montreux record रे आम इंडिया रो केतेटा साइट अछंदी आजि का डेट रे गोटे लोकथक लेक मणिपुर एंड अनदर वन इज केवलाडियो नेशनल पार्क एक्चुअली एथरे तीनिटा थिला आ गोटे थिला चिलिका लेक तो पिला माने एटा हमरो ओएस क्वेश्चन में आसीची कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन थिबो कि दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड माने चिलिका लेक टा फर्स्ट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रे थिला डेंजर जोन रे थिला किंतु सेटा रिकवरी हे गेला और सेटा बेटर प्रोग्रेस कला तो हेति में चिलिका लेक को बाहर करा हे गेला तो वर्तमान आज का डेट रे हमरो दुईटा अछि दैट इज लोकथक लेक मणिपुर लेक क्वेश्चन पडिथिला कोटा को हमें मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रो उठे देथिलु दैट इज चिलिका लेक Okay, so moving on to the next. So I repeat, wetland identification, Ramsar Convention, protection, Montreux record. Ama India re presently dita site achandi Lokthak Lake, Manipur, Keoladio National Park, Rajasthan. Okay, moving on to the next convention. Convention on Biodiversity. Friends, previous or OS question ne padithila CBD ro full form kono. Dekho kete easy question. Convention on Biodiversity. यार तीनटा एम अछि सेथरो थर्ड एम रिलेटेड टू जेनेटिक रिसोर्सेस माने सपोज मु गोटे गछरे एमती गोटे जेनेटिकली किछि इंड्यूस कली से गछर जो आंब हैला से आंबर मांस बढ़ी जे टाकुआ साइज छोट होबो ता माने गोटे न्यू टाइप ऑफ फ्रूट हमको डेवलप हैला तो एटा जदी जेनेटिक हम इंड्यूस करी कि आंबटा को बड़ साइज करि परछु एटा बहुत भलो आ जदी बहुत भलो ए आइडिया को समस्त में शेयर अप करियो दरकार so को भी genetic resources रे if that idea is better and is providing better benefit we have to share it to the other world that convention is convened in Nagoya protocol जेनेटिक रिसोर्सेस रे यूज करो भलो हेले शेयर करो
किंतु जदि किसी जेनेटिक रिसोर्सेस रे किसी आम इम्प्लांट करूचे जोटा कि आम ह्यूमन बीइंग रो हेल्थ को डेंजर जोन को पकाउची सपोज आम किसी गोटे खाइले जोटा आम ह्यूमन बीइंग भीतर को आसला सपोज किसी भी जमी फॉर एग्जांपल वन इज बीटी कॉटन ए कॉटन को मारिया पे सेटा बीटी कॉटन आम दौचे बेसिलस थेरेन्जुरिस तो सेमती आम किसी जदि नुआ फ्रूट रे इंड्यूस कले फ्रूट आम भल पाइले किंतु फ्यूचर रे 10-12 वर्ष पर सेटा आम जो ह्यूमन बीइंग इनटेक कले so if that will be creating any problem to human being then that should be stopped so any protection we have to first take care of the human health and environment from the potential negative impact of living modified organisms or genetically modified organisms okay तो first हमें genetic induce कले better है share करो किंतु जोटा problem होची सेटा को stop करो so that stoppage is provided in Cartagena protocol so remember convention on biodiversity रे third aim रा हमर दीटा गोटे नगाया protocol sharing करिवा Cartagena protocol human health and environment को जदि affect करछि we have to stop it one of the best example is BT cotton now moving on to the some POPs or in short persistent organic pollutants तो देखंतु आमी फर्टिलाइजर्स यूज करछे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इंडस्ट्री केमिकल्स तो एइथ्रु जदि किछि हार्म दउछि फॉर एग्जांपल गोटे एंडोसल्फान थिला एइटा जदि हमको बहुत हार्मफुल इफेक्ट दउछि ता हमको एटा एलिमिनेट करिवार अछि किछि एमिति भी पेस्टिसाइड थिबो फर्टिलाइजर्स थिबो पेस्टिसाइड हमें देले जोटा प्रोडक्ट भलो बाहरिबो किंतु ह्यूमन हेल्थ को खराब करियो तो एबेले पेस्टिसाइड्स को हमको एलिमिनेट करियो जदि किछि बहुत कम अफोर्ड करछि हमें ताकू धीरे धीरे मिनिमाइज करियो एलिमिनेशन and minimization and completely removal of some dangerous pesticides and insecticide comes under Stockholm Convention. Another one is called Rotterdam Convention. एइथरे कोन होची फ्रेंड्स एइथरे हमें कोन persistent organic pollutants यूज करछे ना किछि hazardous chemicals और pesticides फॉर एग्जांपल डीडीटी हमें पानी प्यूरिफाई करिया को डीडीटी पके देले एमान को माछ खाइले से माछ का भीतर डीडीटी गला मनीष भी खाइले चिल्लो भी खाइले जो चिल्लो खाइले सेडा बाल्ड ईगल है कि जन्म हेले माने से चिल्लो मानकर पक्षी मुंड रे चुट्टी उठिलानी सो दोज आर द बाल्ड ईगल्स तो माने इनडायरेक्टली डीडीटी स्पॉइल करि गला हमर ईगल पॉपुलेशन को डीडीटी इनडायरेक्टली हम ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म दउची तो एमिति किछि केमिकल्स हार्जाडियस केमिकल्स की पेस्टिसाइड जोटा हमर ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करे दैट कम्स अंडर रॉटरडैम कन्वेंशन किंतु जदि किछि हार्जाडियस वेस्ट अछि आ तार प्रॉपर डिस्पोजल दरकार फॉर एग्जांपल हमें बैटरी यूज करछे फेंगी दोछे आ उतर यूज होने टॉक्सिक बम एक्सप्लोसिव पेंट्स एडा सब थरे यूज होला पर आउथरे खराब हे गेला हमें डायरेक्ट फेंगी दोछे तो जो फेंगी दोछे सेडा को कोठी जागे हम सेना फेंगुचे बीएमसी उठौची देयर आर सम वेज वी कैन डिस्पोज देम सो यार जो प्रॉपर डिस्पोजल होची से डिस्पोजल ऑफ व्हाट very important hazardous wastes it comes under Basel Convention friends ए तीनटा जगह हमें कहूचे sister convention these three are called sister convention किंतु या बाद भी गोटे बहुत important famous question आछी hazardous wastes and disposals it is governed but none where they have mentioned any radioactive waste disposal so particularly for any hazardous radioactive waste disposals a special convention is concerned that is called Bamako Convention okay I hope this idea is very clear so hazardous waste and disposal is covered in Basel but radioactive hazardous waste disposal is covered in Bamako Convention so see the difference dira jagare hazardous achi but how can question will come that you have to identify and you have to answer here I have given you the crystal clear idea now let us see some questions on ozone ozone means ozone we have to see some layers of the ozone ame janiche troposphere then we have stratosphere here we have some ozone layer so हमको ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करिवार अछि yes we know it's a very important thing so that simple concept is called Vienna Convention आमे जहां भी पोल्यूशन करछे CO2 कले आमे जाबे NO2 ऊपर को गला ओके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ऊपर को जाए तो आमे जेमति आमे क्लोरो क्वेश्चन एमति पढिछि ओएस रे कोन एमति यूज कले क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहर AC हैला फ्रिज हैला ओके सो दिस विल दिस एमानंटो बेसी CFC बाहर तो आमे एमिति किछि अल्टरनेटिव करबा कि जो CFC बहुत दूर को जाउची ओजोन लेयर जाय हैम्पर करिया को ए CFC रो आमे सब्स्टिट्यूट बाहर करिवा we have to go for some HFCs so CFC जोड़ा बहुत ऊपर को जाउची सेडा को हमें सब्स्टिट्यूट बाहर करिया हमें यूटेंसिल्स यूज करि पारिबा so that it comes under Montreal protocol we have to find some substitute for CFC माने एनवायरनमेंट को ओजोन लेयर को जीवा पई CFC बहुत ऊपर को जाए तो एते ऊपर को न जीवा पई आउ इमति एसी रे हमें आउ इमति किछि गैस लगे परिया जोडा टिके कम लेयर जाय जाय परिबो so that means the CFCs will be substituted by some HFCs that comes under Montreal protocol if you see Dubai pathway
Dubai pathways, that means alternative to HFCs. Future रे भी इनके HFCs हमें कौन यूज करिवा तार भी alternative बाहरिबो जोटा कि आहुरी कम level of pollution करुथिबो तो एथरे एटा भी important. So here you all to remember also one very important, that is Kigali agreement. एटा गोटे important, एटा question आसी पारे. Kigali agreement, Paris agreement, you guys everybody know 2 degree Celsius को सेटा में at least 1.5 degree Celsius है minimize करि परिबा. एटा हम इंडिया भी एथरे बहुत high level रे interest नहीं कि एटा को सक्सेस करेइथला. But Kigali agreement, what is Kigali agreement? That means we have to reduce the consumption, and reduction of HFCs. So we have to go for consumption, means decrease the consumption and also decrease the reduction of HFCs. Okay friends, so let me just revise you. ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करिवो, सिंपल कांसेप्ट रे वीना कन्वेंशन. सीएफसी को एचएफसी रे रिप्लेस करिवो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. एचएफसी जहां भी हमें यूज करिवा, एचएफसीज रो प्रोडक्शन और कंजम्पशन को रिड्यूस करिवो किगाली एग्रीमेंट. किंतु एचएफसी रो सब्स्टिट्यूट कोथरे बाहर करा हबो, दुबई पाथवे. So these are the most important international conventions related to environmental studies. Wetland ro Ramsar Montreux, CBD ro Nagoya Cartagena, POP ro Stockholm, Rotterdam, Basel, tinta ko sister convention. But something not covered in sister convention is radioactive disposal of hazardous wastes. That comes under Bamako Convention. Ozone ro Vienna, Montreal, Kigali, Dubai. ई चारटा आपण देखिले. Now let us see some important days. देखो the important days is always very special with respect to environment. ये जो पांचटा मु लिखि देछि, ए जो पांचटा एरा तो by default आपन को घोषिबा को पड़िबो. तो इथरे आपन को पड़ी जाय कि 2023 रा थीम कोन. वेटलैंड डे रा थीम बहुत important. So its theme was it's time for wetland restoration. It's time for wetland restoration. and पछरियो वर्ल्ड एनवायरनमेंट 2023 रा थीम कोन. इट्स बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. beat plastic pollution. India is the first country in Asia to sign plastic pact policy. 2030 ପରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ plastics ବି ମିଳିବ ନାହିଁ. So these are the some other days. So everywhere you have to remember, for example March ମାସରେ କଣ environment ର important? March 3 World Wildlife Day. March 23 it's World Meteorological Day. ओके सेमिति एप्रिल मासरे आपनको मन रखिया पड़े. एप्रिल 10 होची वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे. एप्रिल 18 वर्ल्ड हेरिटेज डे. सेमिति मे मासरे आपनको दीटा मन रखिया पड़ियो. मे 3 होची इंटरनेशनल एनर्जी डे. मे 8 होची आपनकर वर्ल्ड माइग्रेटरी डे. सेमिति जून मासरो एनवायरनमेंट पॉइंट्स रो कोन इंपोर्टेंट? वर्ल्ड ओशन डे होची जून 8. ओके कोरल ट्रायंगल डे जून 9. June 17 is also very important. World Day to combat desert and desertification and drought. That comes under June 17. So like that you have to remember. जहाँ जहाँ मुझे कहली सेटा को अपन थोड़े रिवाइज करने में इजी रही है. इवन अक्टूबर मास, अक्टूबर 3 रे होची वर्ल्ड हैबिटेट डे. अक्टूबर 6 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. एंड अक्टूबर 24 इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो जहाँ जहाँ कहली टिके नोट अप कर देबे. बट रिमेंबर ए जो पांचटा लिखेली ये पांचटा जगह रो कोन कोन थीम अछि. इवन ओएस क्वेश्चन ने आपन को ए जो वेटलैंड डे रे आपन 2023 रो थीम और 2022 रो थीम भी मन रखंतु. ओके नाउ some important headquarters. थोड़े क्वेश्चन पढ़थिला IUCN रो हेडक्वार्टर को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वेंशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. OS रे एटा भी परिची यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रो हेडक्वार्टर कोठी केनिया नाइरोबी. सो दीज आर द हेडक्वार्टर्स. एठी को लिखै देछि इजीली आपण थरे आखि पके देबे रिवाइज हे जिवो. फादर्स प्रीवियस ईयर OS क्वेश्चन ने पढ़थिला हु इज द फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी. बहुत पिला माने नॉर्मन मेयर लिखि देथिले. बट बायोडायवर्सिटी रो ईओ विल्सन. बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट यांकर होचंती नॉर्मन मेयर. So remember these two are different things. Depending upon question, look patiently and then you will answer. Ecosystem, father is Arthur Tansley. Ecology, Ernest Haeckel. But if question will come, who is the father of ecology in India, particularly in India, then answer is Ramdev Misra. जिनके हमें ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ुचे, फादर इज नॉर्मन बोरलैक. हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन. जे के वे मरिगले स्वामीनाथन. लाइक दैट फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इज रामदेव मिश्रा. And combining this ecosystem and ecology, father of ecosystem ecology is Odum. Okay, atmosphere रे एटा कोको लेयर. इवन हमें एते लेवल ऑफ
एजुकेशन हमर बढ़िलानी तथापि ओएस वाला क्वेश्चन पके दउछन्ती स्ट्राटोस्फियर प्रेजेंट बिटवीन ट्रोपोस्फियर मेसोस्फियर किंतु जदि आपन को पचारिबा स्ट्राटोपॉज तो स्ट्राटोपॉज माने स्ट्राटो थिबो तो ए दिटा लेयर स्ट्राटो तळे थिबो तो एनी लेयर दीटा लेयर रो मझी लेयर को हमें पॉज लेयर बोली कहूचे तो दीटा लेयर रो को एटा लेयर हबो पॉज लेयर ना तळे जोटा थिबो स्ट्राटो पॉज तो स्ट्राटोपॉज प्रेजेंट बिटवीन स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर स्ट्राटोस्फियर प्रेजेंट बिटवीन ट्रोपोस्फियर मेसोस्फियर सेमती एटी गोटे 100 किलोमीटर लाइन अच्छी सेटा को हमें कर्मन लाइन और टर्बो पॉज बोली कहूचे turbo pause line after that turbo engines are blasted okay next internal structure of what discontinuous रे देखंतु chief minister रागी जिबेलो कोनार्ड मोह रेपिटी गुटेनबर्ग लेहमान क्वेश्चन केमती पड़े which of the following is the discontinuity within the mantle ଭିତରେ discontinuity होची mantle upper mantle lower mantle rapid discontinuity between crust and mantle एटा क्वेश्चन ओएस रे पडिची crust and mantle तो crust एठी भी अछि mantle एठी भी अछि तो crust mantle जोठी cross section अछन this one so it is called moho so like that discontinuity within the core that is Lehmann between mantle and core that is Gutenberg so like that you have to remember and my shortcut I remember is chief minister Ragi Jibe Lo okay ecological देखो habitat and niche two different things habitat is the home सिंह ता घरे niche is the profession सिंह कोन काम करे एबे सिंह कोन काम करिवो ना practically सीए it will go to hunt सीए शिकार को जीवो ता एरिया रे जीवो practically से जाउची that is called release niche reality रे सीए एतिकी काम करूची किंतु जदि ता एरिया रे ताको खाद्य मिलिबोनी से हे पारे आउका डोमेन को पड़े तो theoretically जाई पारे न भी जाई पारे but जाई भी पारे that is theoretical that is fundamental niche so you have to identify what is the difference between fundamental reality so remember R for reality R for realized R for real things R for practical review ecotone dita ecosystem रे तांको मझिरे जो ट्रांजिशन जोन थिबो सेटो को हम इकोटोन कहूचे जेंति हमें पढ़ले एटी के एटा रिवर थिले एटा लैंड थिले वेटलैंड सेमिति जदि एटा समुद्र थिबो एटा रिवर थिबो ताहले एस्चुअरी तो एउडा होचन डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ वेटलैंड कोन थिले तो कोन थिले कोन आमी ताको कहबा तो एथर गोटे क्वेश्चन हमको एमती देखा जाइथिला कि देखंतु गोटे फॉरेस्ट इकोसिस्टम फॉरेस्ट एथरे बढ़ी के अछि डेजर्ट इकोसिस्टम एथरे डेजर्ट भी बढ़ी के अछि फॉरेस्ट बढ़ी अछि किंतु गोटे टाइम से फॉरेस्ट मिनिमाइज होउची काहेना डेजर्ट स्टार्ट होउची सेमते डेजर्ट भी एठी बढ़ी की थिला एटा डेजर्ट मिनिमाइज होउची तो एई जो लेवल टा होउची एई जोन टा को हम होचे जोन ऑफ टेंशन एठी वेराइटीज ऑफ जीवजंतु एठी वेराइटी ऑफ जीवजंतु बट एई जोन ऑफ टेंशन ने सबटो अधिक वेराइटी ऑफ जीवजंतु हमें पाइबा दैट इज व्हाई दिस इकोटोन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पेशल सो कोन इकोटोन अछंती दीज आर द वेरियस इकोटोन्स कहा मझिरे इकोटोन होउछंती दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई आई हैव रिटन द आंसर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन आज जो हमें एडे बड़ बढ़िया सिटी देखुचे भुवनेश्वर एटा मिलियंस इयर्स तले नथिला कोन थिला आ कोन आजि का हेउची तो ए जो सक्सेशन हेची किछि नथिला रो नै के आजि एमति छिनछत्र must area so this type of succession is of four types autogenic allogenic hydrats and xerats so hydrats and xerats related to forest development but hydrats in presence of water xerats in absence of water autogenic succession jaha bhi hoji it is due to the living species or biotic species but if it is abiotic species abiotic factors if leading to lot of development to lead forest or any generation it is called allogenic succession so remember ecological succession ni chari prakar definition आपन को एग्जाम रे पढ़ी पारे कोटा रे केमती हेबो एमती गोटे एग्जाम रे ओइस रे पढ़ीथिला which of the following vegetation leading to a development of forest in presence of water so that means we have to answer this hydrant very simple इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हमें जानी छे फूड चेन फूड वेब अछि याको खाउची से ताको खाउची फूड चेन फूड वेब मल्टीपल food chains consist of one food web so it is also called energy transfer law or Lindeman's law ଆଉ ଏଇଟା ତ ଓଏସର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପକେଇଥିଲେ arrange the proper sequence ଆଗ ଡାଇଆଟମ୍ସ ଥିବେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ତାପରେ ହିରେନ୍ସ ତାପରେ ମେକାନିକ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ଥର ପଡିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଲି this is a sequence ଏଇଟା ଛୋଟ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ବଡ International conventions, related institutions, organization, conventions and protocols. Friends, गोटे आखि हमें रिवाइज करे दवा हमें ऊपर देखले वेटलैंड रे गोटे आइडेंटिफिकेशन पे रामसर किंतु प्रोटेक्शन पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड सीबीडी जेनेटिक रिसोर्सेस जदि भलो शेयर करूछ नगाया किंतु जदि काठीगर पाठ हैला देन वी हैव टू गो फॉर कार्टिजिना प्रोटोकॉल persistence organic pollutant insecticide pesticide stockholm hazardous chemicals rotterdam hazardous disposal basel
but radioactive dispersal go macro. Ozone VNAP, ozone layer protection, Montreal substitute for CFC, Kigali decreasing emission of HFCs, and Dubai pathway again alternative to HFCs. These are the important days. Headquarter key car father atmosphere ऊपर किसी क्वेश्चन देखिले atmosphere रे देखंतु क्वेश्चन पड़े ओजोन को लेयर रे अछि स्ट्रेटोस्फियर कोल्डेस्ट लेयर कोटा मेसोस्फियर को लेयर रे matters are visible in mesosphere co layer is also called ionosphere. This is also called ionosphere. Co layer is satellite communication with thermosphere. Most turbulent layer troposphere, most disturbed layer troposphere, the first layer troposphere, innermost layer the initial layer that is also troposphere. So bad activities could be troposphere. So like that these questions are coming. International convention related institutions organization. So देखो इटा WWF. अच्छा एठी मु किछि क्वेश्चंस लिखिछि फ्रेंड्स माने 2016 रे देखो चारिटा जगह क्वेश्चन पड़ीथिला 70 71 72 ए सब जगह आंसर एटा ए सब जगह आंसर अपने ए भीतर ही पाइले WWF वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यार लोगो होछि ब्लैक एंड व्हाइट पांडा इवन क्वेश्चन भी पड़े WWF रो लोगो कोन व्हाइट पांडा रेड पांडा स्वीट पांडा इन ऑप्शन ने थिबो सो इट इज व्हाइट पांडा ये पब्लिश WWF publishes living planet report living planet index and ecological footprint एबे प्रीवियस करंट अफेयर्स रे प्रीवियस ईयर ओएस एग्जाम रे गोटे डेफिनेशन पढितला व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फुटप्रिंट एतिक बड़ जगह अछि केते लोक सेठी पाद पकेछन केते लोक खाउछन केते लोक ह्यूमन कंजप्शन करछन एक्चुअली द डेफिनेशन इज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कंजप्शन and their demands in nature to regenerate resources. Resources are regenerated again and again. That is the definition of footprint. The exam re padithila unit. Unit is measured in global hectare. So in the big hectare, how many items have been used? What is the ways that it can regenerate the resources? So this is the definition, and the unit is global hectare. Sites are a definition. The traffic, IUCN. So these are the definitions. I have listed it here. You can watch it on. Next. आगो को बढ़िबा environment degradation and pollution हम environment degrade केंदी होछि and pollution related किछि क्वेश्चंस हमें देखिबा तो देखंतु eutrophication माने कोन गोटे जगह रे माने कोडी इंडस्ट्री रो पानी आसिला एंती पानी आसी सेटा एग्रीकल्चर लैंड रे डिपोजिट हेकी पड़ला किबा कोठी एंती सब जगह रो जो proper drainage system there will be no proper drainage system water will come it will remain stagnant on the water bodies if water will remain stagnant then sunlight penetration will not be possible sunlight if unable to proceed then the living kingdom inside the water they will suffer so hypoxia anoxia these are the features which are available anyway eutrophication is of three types oligotrophy if there is less nutrients deposited mesotrophy if there is moderate nutrients eutrophy if there is excess nutrients so if the excess nutrients are deposited it will say very excess nutrients are deposited it will prevent the penetration of sunlight and it will kill the organisms living inside the sea water or ocean water or pond water or whatever the water surface the water kingdom will be lost so slowly all the kingdom will be a dead zone and this entire dead zone will be treated as an algal bloom okay so like that so depending upon the nutrient deposits the penetration of sunlight will be less more nutrients excess nutrients severe nutrients this is called eutrophy that is why the eutrophication word is taken from this word eutrophy oil spills समुद्र रे जहाज जाउछ जहाज रे एक्सीडेंट हे गेला किछि ऑयल उडा स्पिल हे गेला त एडे बड समुद्र रे जदी ऑयल भी डिपोजिट हे गेले त एठी भी सनलाइट बसिबा कष्ट हे जिवो सेही भितरे मेराइन किंगडम इट विल बी लॉस्ट so in that way we have to clear these oil spills so इमजी किछि छोटा छोटा डिस्पर्सेंट्स अछि किछि किछि छोटा केमिकल जदी हमें सपोज एटा समुद्र लेवल रे एतिक रे ऑयल स्पिल हे जाईछि त हमें कोन करबा सेटा फ्लोट होबो so that way we have to spray some dispersants ए डिस्पेरेंट्स कोन करिवो धीरे धीरे ऑयल स्पिल्स को ब्रेक करिवो सो यार रिजल्ट कोन हे जिवो ये छोटे छोटे पीस रे इनके ब्रेकअप हे जिवो सो दैट्स एटलीस्ट some little ray of hope will exist for the marine kingdom to survive so that is way so remedy हमें केमती करि परिबा that event is known as remediation OS रे तीन थरा ए क्वेश्चन आसलानी OS रे दी थरा ए सेम क्वेश्चन आसलानी bio accumulation means by any process there will be accumulation of wastage on the water kingdom upper surface bioremediation if there is an accumulation then what is the process we can clear it so one of the answer was disperants
डिस्पेरेंट स्प्रे करी हबो तो बहुत सारा आंसर अछि वन ऑफ द आंसर डिस्पेरेंट तो बायो रेमिडिएशन माने रेमेडी व्हाट इज द रेमेडी व्हाट इज द ट्रीटमेंट बायो एक्युमुलेशन द प्रोसेस बाय व्हिच एनी एक्युमुलेशन इज बीइंग टेकिंग प्लेस सो दीटा डेफिनेशन मन रहिला डेफिनेशन रो ही क्वेश्चन आसुची एथरो तीनटा क्वेश्चन आसलानी एथरो दीटा क्वेश्चन आसलानी इन ओएस एग्जाम ना कोरल ब्रीचिंग हमें जानि छे corals are very important this is a class this is a phylum they stay in symbiotic relationship with algae coral अछि the tiny animals algae दी जण मिसिकी से माने जो symbiotic relationship और mutualism form करंती that is zooxanthelia गोटे coral active अछि माने green color जदि से मरी गला then it becomes white in color question एटा पडिची कि जदि coral मरी जाय white color they release what they release calcium carbonate CaCO3 एटा question ने पडिची already coral रो हमरो size केते 1 to 3 mm देखो एटा होची गोटे coral रो size एटा individual coral माने polyp a group of polyps is known as corals so individual coral को polyp कहबे group of polyps is known as corals nocturnal invertebrates so these are the properties by which question may come a question we already पढ़ी 21 to 29 degree warm water रे ସେମାନେ survive करबे okay moving on to the next page friends so any doubts you can download this GSEC app exclusively current affairs samayikre publication ହେଇଛି okay come to ecological pyramid pyramid is of three types ecological energy pyramid is always upright माने जे जहाँ खाइबो सब ऊपर लेवल को ट्रांसफर हो biomass pyramid it may be upright or it may be downward एटा क्वेश्चन ने पढ़ी which of the following pyramids may be upright or inverted बड़ माछ छोटो खाइबे एटा साइज ऊपर डिपेंड करे देखो साइज बड़ माछ छोटो माछ जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन तो साइज धीरे धीरे छोट छोट हे नंबर्स एटा ऊपर को हे पारे तळु को हे पारे देखो एटा ऊपर को अछि एटा तळु को अछि किंतु कंबाइन कले एटा टोटल ऊपर को तळु को मिक्स्ड अछि तो हम एटा को मिक्स्ड पिरामिड भी कहउछे का पिरामिड ऑफ नंबर्स फॉर एग्जांपल गोटे गच्छ अछि गच्छ रे 20 टा चढ़ई बसचंती माने डेफिनेटली अधिका अछंती 20 टा चढ़ई को खाइया पे 5 टा कार्निवोरस चढ़ई अछि तमने या को पॉपुलेशन छोटो तो ये गोटे ये आउटी के बड़ो ये आउटी के कम सो लाइक दैट इट इज इन्वर्टेड सो दिस इज वन एग्जांपल now biodiversity hotspot upara me padithile father was Norman Meyer India ro charita biodiversity hotspot achi friends gote is western ghat this is western ghat Himalayas Indo Burma out tike endi felibo Indo Burma tike map re bhul kar dechi Indo Burma and Sunda land it includes many Andaman Nicobar choto choto epota island achandi choto choto misi ki samost ko ame koche Sunda land एथर क्वेश्चन पड़े कि सबटु बड़ वेटलैंड सबटु बड़ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इज वेस्टर्न घाट जेहेतु सबटु बड़ याको प्रोटेक्शन पय कमिटी होची माधव गडगिल कमिटी जो माधव गडगिल कमिटी बहुत स्ट्रिक्ट थिला तापर आ गोटे कमिटी थिला कस्तूरी रंजन तो ई एरा क्वेश्चन आईएएस रे भी पढंती ओएस रे भी एबे पढंती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कमिटी मेंबर्स टू प्रोटेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट so the madhav gadgil committee kasturi ranjan तो दीटा जगह कमिटी अछि so like that you have to remember the answers biodiversity को कंजर्व करबा in situ माने internal means the forest which are available naturally ex situ x stands for you can say something external so external is not available in the market we have to go for preparation of that for which it is called is artificial it is being prepared so zoo nandankanan zoo artificial gene bank seed bank botanical garden aquarium biotechnology एबे जिंदी गोटे खच्चर बोली गोटे अछि घोड़ा भलिया दिसिबो केना घोड़ा ଆଉ ଡଙ୍କିର କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିଛି ଖଚ୍ଚର ଦେଖୁଥିବେ ବଡ ବଡ ପାହାଡ ଚଢିଲା ବେଳେ କି वैष्णोदेवी पहाड़ चढ़ला बेले पिठू ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନହେଲେ ଖଚ୍ଚର ଘୋड़ा ଭଳିଆ ଦିଶିବ ବେଳେ ବେଳେ ଡଙ୍କି ଭଳିଆ ଦିଶିବ ସେଟା ଖଚ୍ଚର so that is not created by god we human being have created with the help of biotechnology इन सितु बायोस्फीयर रिजर्व हमर 18 टा बायोस्फीयर रिजर्व अछंती प्रथमटा होची नीलगिरी एटा केबे हेतिला एटा भी आपन क्वेश्चन ने पड़े कपिल देव वर्ल्ड कप जितले सेतोळ हेतिला नेशनल पार्क 104 6 टा नेशनल पार्क अछि 538 टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि एवडा इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर केबे हेतिला 1973 प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल केबे हेतिला 1975 प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009 कोरोना पैंडेमिक में घरे थिलु एटा हे जायतिला 2020 रे प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो फ्रेंड्स एथरे क्वेश्चन पड़े कि आगो फर्स्ट रे हमरो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थिला 8टा 2015 पर याको रिप्लेस करा हे गेला एंड इट इज नाउ मॉडिफाइड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जोटा कि हमरो 17टा अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जोटा 17टा अछि ओके
सो मुझे लिस्ट रे लिखि देछि 17टा सेटा आपण देखि नेबे आपण एथरे अपडेटेड करंट अफेयर्स रे क्वेश्चन ए आसी पारे कि हमर जो G20 प्रेसिडेंसी हैला तो हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट तो हमर इंडिया रोल ऑफ इंडिया कोन थिला हम जोटा को बेसी एम्फासिस कर ओके तो सेथरे आपण गोटे दिटा तीनटा पॉइंट मन रखि दियंतु गोटे आसला लाइफ it is created by Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Environment, Forest and Climate Change. Life means lifestyle. Lifestyle for environment. Environment ro betterment पे हमें किमिति lifestyle टा को करियो. So life app installed by Union FCC. How we should prepare ourselves for the betterment of our lifestyle. Another one is green financing. Whatever the financing will come with related to economic and fundamental growth, we will proceed with green financing. And third one is most important is India all over world रे समस्तଙ୍କ ସହିତ जो tie up କରିଛି India and France with International Solar Alliance. So ए तीनटा International Solar Alliance and CDRI ए दीटार coalition. Okay, coalition of disaster resilient infrastructure. कोआलिशन ऑफ डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ए दीटा को मिसे ए तीनटा रे इंडिया बहुत एम्फासिस देला और लोक मन को बुझेला और दे आर ऑल सैटिस्फाइड इंटर सोलर अलायंस तो हमें फ्रांस से तो करी छे जो तो आज का डेट रे बहुत कंट्रीज हम सहित भी अच्छा any app you want to download go to my GSEC app monthly current affairs package is available anyway friends asantu the last part is atmosphere portion को पढेबा क्वेश्चन ओएस रे एटा पडिथिला 20 हर्ट्ज रो हमर ह्यूमन ऑडिबल रेंज केते एति हर्ट्ज एटा क्वेश्चन ने पडिछ किन जो डेसिबल रे पडे ताले मो एटी आंसर लिख दिछि 0 to 130 dB suffer summer these are the two schemes you should remember what is the full form which is written here ओएस रे ए क्वेश्चन भी पडिछि कि टिके बड़ बड़ धर नियंतु फॉर एग्जांपल कोठी कोटे निया लागिला माने हमें सपोज कहबा कि सपोज एग्रीकल्चरल लैंड को जळा हैला धुआं बारियो ओके किंतु आपण सपोज जाउछंती बाइक रे स्कूटर रे जाउछंती बहुत धूली होउची धूली को दिसुनी किंतु हम नाक रे निश्वास नउची तो जो धूली हमको दिसुनी किंतु हम नाक भीतर को नउची समान का डायमीटर बहुत स्मॉल केते डायमीटर 2.5 सो दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन 2.5 माने स्मॉल डायमीटर्स किंतु जंगल रे निया लागियाला किछि इंडस्ट्री रे निया लागियाला बड़ बड़ के धुआं दिसुची हमको तो तारा डायमीटर बड़ दैट इज कॉल्ड PM10 एसिड रेन पाइन these are the responsibles कौन हेले को डिजीज अधिका इनटेक हेले कौन डिजीज होची एथरे एक क्वेश्चन ओएस रे पडितला मर्क्यूरी अधिका इनटेक हेले एटा जापान ने बाहरतला मीनामाटा डिजीज ओएस रे एक क्वेश्चन भी पडितला एटा दी थर पडची भोपाल गैस ट्रेजेडी पर्टिकुलरली को गैस रो एटा सो एडा होचन डिफरेंट केमिकल्स जोडा अधिका इनटेक हेले कौन रोग होई पारे कैडमियम हेले इटाई और आउच आर्सेनिक ए पादौडा कळा पडी जिवो ओके पाद कला पड़ जीव नाइट्रेट अधिक हेले ब्लू बेबी सिंड्रोम ब्लू बेबी हे गेला गोटे पिला को जदी ब्लू रंग हे गेला डजंट मीन कि श्री रामचंद्र जन्म हे गेले ताकू ब्लू बेबी सिंड्रोम हेची ओके लेड हेले प्लम्बिज्म हबो बोस्टनियन लाइन कोंती दांतर माडी गुडा येलो हे जिवो सो दैट इज कॉल्ड बोस्टनियन लाइन्स सिलिका डस्ट ब्लैक फंगस डिजीज ब्लैक लंग डिजीज आई रिपीट भूल कहि देली ब्लैक लंग डिजीज किंतु आपण कोरोना रे गोटे ब्लैक फंगस डिजीज आस्तिला तो ब्लैक फंगस रो दीटा क्वेश्चन मन रखिबे ब्लैक फंगस डिजीज जोटा कोरोना वायरस रे आस्तिला सेटा को हमें कहउछे म्यूकोरमाइकोसिस दैट इज कॉल्ड म्यूकोरमाइकोसिस the black fungus disease identified in covid-19 was mucormycosis आ जदी का को mucormycosis हला से मेडिसिन कोन खाइबो एम्फोटेरिसिन बी कोरोना ऊपर all details of corona expected 20 questions मु ये ऐप रे भी देछि अपन डाउनलोड करके देख पारे ओजोन फर्स्ट टाइम ओजोन होल देखाइतला अंटार्कटिका रे यूनिट होची डॉप्सन यूनिट पर्टिकुलरली ओजोन टा होची एमिति ओके तो ओजोन हेल्दी अछि माने कोन कहबा 3 mm हाइट अछि किंतु को जगह रे ओजोन टिके एमति लेवल टा कमी जाय छै माने जदी लेस देन 1 mm हे गेला सेटा को हमें कहउची ओजोन होल बोली एमति नै कि कोना अछि ठाकुर पळे आछन ठाकुर रेस पळे आछी ओजोन होल माने से ओजोन रो विड्थ टा लेस देन 1 mm हे जाय छै दैट इज कॉल्ड ओजोन ग्रीन हाउस गैसेस रे ए तीनटा क्वेश्चन आपण घोषि नियंतु फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट होची CO2 किंतु कोटा वाटर वेपर मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल इज वाटर वेपर लाइफ टाइम कोई अधिका लाइफ टाइम रही पारे CF4 सुपर ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को गैस सब डेंजरियस
that is SF6, which is also called super greenhouse gas. Paris agreement कौन आमे देखी थिले 1.5 ने रखिबा. कार्बन क्रेडिट एटा गोटे क्वेश्चन पड़िथिला. वन क्रेडिट माने केते कार्बन को आमे कंसीडर करूचे is equal to 1 ton of CO2. Details of environment आमे तो स्टेप बाय स्टेप नोट्स रे आमे पढिबा, किंतु एटा गोटे क्विक रिवीजन. तो जो माने पढी चंदी से मानको इजीली मने रहि जिवो. तो देखंतु रेड एंड रेड प्लस प्लस यार फुल फॉर्म पढिथिला. रेड रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिप्लीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, किंतु एटा रेड हैला परे तापरे तांको मन पडला रे फॉरेस्ट उडा भी तो डिग्रेड होची. तो रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, किंतु डिफोरेस्टेशन भी होची, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट भी होची. तो तापमे असला रेड प्लस. तो क्वेश्चन एटा भी पड़े रेड जोटा फुल फॉर्म कोन एटा कोठी एक्सेप्ट हेतिला मॉन्ट्रियल रे केबे हेतिला कॉप 11 रेड प्लस बाली रे हेतिला इन कॉप 13. ओके फ्रेंड्स, तो एटा को आपण एतिकी रिवाइज करंतु. डेफिनेटली एथरो क्वेश्चन हमर कन्वेंशन अछि, एटमॉस्फेयर ऊपर हमें पढले, पोल्यूशन लेवल्स पढिले, बायोडायवर्सिटी पे पढले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढिले, पिरामिड्स पढिले, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन पोल्यूशन पढले, कन्वेंशंस पढिले एंड सम पार्ट्स ऑफ इकोलॉजी पढले. एतिक भितर हमर डेफिनेटली क्वेश्चन पढि जाय. मोर प्रीवियस ईयर जेतिक स्टूडेंट्स माने देइछनी दे आर वेरी हैप्पी. बहुत क्वेश्चन सब पढि. सो आपण मन को एतिक रिक्वेस्ट थरे आपण रिवाइज करिवे. एंड प्लीज पॉसिबल प्लीज शेयर अप माय ऐप. GSEZ is my app. Please download it on mobile. Thank you so much. Have a good day. God bless you all. Thank you so much. Bye.